Hello everyone. Hello. Hello. We're just waiting for the few followers to join and then we'll start our session. Hello everyone. Hi. Hello. Hello everybody. Hello everyone. Hi. Hello. Hi Divya. Hi Gamara. Hello. Hi Pratibha. Hi Kuhu. Thank you so much. Hello. I'll just show you the ingredients. Today we are doing Arabic special, and today is my 7th session with Amul, and you can have a look of my setup, what I'm doing today. आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही easy dish with eggplant. You can have a look. Hello. Today's special is Imam Bealdi. That's a Turkish dish, and we'll be making with vermicelli rice. Hi Saurabh. Hi, hello everybody. So we're gonna start our session in another minute. Just waiting for a few of the people to join and then we'll be starting our session. Hi Bhavesh, today's special is Imam Bealdi. It's a Turkish dish of eggplant stuffed, and you can fry it or else you can roast it in the oven. It totally depends upon you. And we'll be making a vermicelli rice over it. So it's a wholesome meal. Yeah. Hi, thank you so much, Kuhu. Thank you. Yeah, it's my 7th session with Amul, and yeah, I'll be coming again and again with the different kind of recipes. So I think we should start our session now, and I'll be just giving my camera to my colleague, and then we'll be starting our session. 7th session with Amul, and I would like to thank Amul for giving me this opportunity again and again to come live, as well as Hilton Garden Inn for giving me opportunity to come live and prepare easy and amazing recipes. And yeah, thank you so much, Meeta. Yes, this is my 7th session, and yeah, I'll be just handing over the camera, and here is the setup which we have done for today's live session. You can have a look what we have done. Here it is. आज हम बना रहे हैं इमाम बेआल्दी. So let's start our session. Welcome back again to the 7th session with Amul. और आज हम बनाने जा रहे हैं इमाम बेआल्दी, the dish with eggplants. So come, I'll show you the ingredients what we're gonna do today. Here it is. Our first section, that is we're gonna make with eggplant. हमने काटे हुए हैं बेल पेपर, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, बेबी एगप्लांट यूज किया है. आप लंबे वाला एगप्लांट भी यूज कर सकते हैं. चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमेटो, चॉप्ड पार्सले, और हमने यहाँ थोड़े से टमाटर पीस के रखे हुए हैं. फ्रेश कोरिएंडर है, एंड देन वी हैव सम पेपर्स. अगर आपके पास रेड येलो पेपर नहीं है तो आप ग्रीन पेपर यूज कर सकते हैं. एंड देन वी हैव पाइन नट्स, सम लेमन जूस, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, फेटा चीज, वर्मिसेली सेवैयाँ जो आपके घर में आपको हमेशा मिलेंगी, गार्लिक, लेमन, और मैंने यहाँ पे राइस सो करके रखे हुए हैं पहले से ही, जो हम बनाएंगे हम वर्मिसेली राइस. सो फर्स्ट व्हाट वी गोना डू, विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर एगप्लांट. सो आई विल जस्ट पुट सम एगप्लांट हियर. हम 2-3 एगप्लांट लेंगे और इसको हमें कुछ नहीं करना, इसकी हमें सिर्फ ऊपर से डंडी काटनी है, बिकॉज हमें इसको फ्राई करना है. फ्राई करने के लिए मैंने ऑलरेडी ऑयल रेडी करके रखा हुआ है, एंड आई विल जस्ट टर्न ऑन द फ्रायर. सो आप देख सकते हैं मैंने छोटे बैंगन लिए हैं. अब इसको यहाँ से एक तरफ से हल्का सा आपको इसको पील करना है, छोटा सा, ताकि इसमें मार्क्स आ जाएं. बहुत ही अच्छी डिश है, टर्की की डिश है, एंड यू डोंट नीड मच आइटम्स टू प्रिपेयर टू यूज. इसके हमने टुकड़े निकाल दिए हैं, एंड अब हम इसमें क्या करेंगे, विल बी प्रिकिंग इट विद नाइफ, ताकि जिसको हम फ्राई करें तो ये अच्छे से खुल जाए. हम देख सकते हैं इसको हम प्रिक कर रहे हैं.
ओके, तुम्हारा एग प्लांट ऑलरेडी हमारा रेडी हो चुका है, जिसको हमने पिक करके रेडी करके रखा हुआ है। इसको हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको मैं गर्म करने के रख रहा हूँ। एंड साइड बाय साइड हम बनाएंगे हमारे वर्मिसेली राइस। वर्मिसेली राइस बनाने के लिए वील बी टेकिंग अ पैन, जिस पैन के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, हमारा तेल गर्म हो रहा है एग प्लांट को फ्राई करने के लिए। और इधर हमने रखा हुआ है राइस बनाने के लिए। हम यूज़ करेंगे ऑलरेडी सोक किया हुआ राइस, एंड विल बी यूजिंग वर्मिसेली। वर्मिसेली है सेवैयाँ। हाय रुखसाना। So let's my colleague read some comments and we can just answer the. Well, Chef, we have a lot of greetings for you from a lot of guests right now. We do have also Miss Heather greetings, Hi, having Heather. greeting you, and Miss Rukhsana from South Africa is also looking your Hi live right Rukhsana, now. thank you so much for joining. And she's greeting you at the moment. We have so many guests right now. Greetings you as usual. Thank No you, more thank you, questions thank at the you so moment. much, thank you so much. So what we're gonna do is now we'll start making our rice, जिसमें हमने ऑलरेडी तेल गरम कर लिया है। तेल गरम हो रहा है, इसमें हम डालेंगे वर्मिसेली। We have a question from Mr. Joshi. Chef, is that a long grain basmati rice? Yes, it's long grain basmati rice. I'm using this double XL rice. It's up to you. You can even use mota rice if you don't have basmati rice, but basmati rice gives a very nice flavor. Yeah. We have Miss Purnima greetings giving from you from Dubai right now. Hi Purnima, thank you so much for joining. We have I think a gentleman, I don't know, Mr. or Mrs. What can we use instead of parsley? Parsley, you can use coriander if you don't have parsley. अब आप देख सकते हैं हमने इसमें ऑलरेडी ब्राउन होना शुरू हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे हमारा राइस। वर्मिसेली को आपको ब्राउन करना है ताकि वो राइस में दिखे। इट्स अ वर्मिसेली राइस, इट्स अराबिक ट्रेडिशनल, यू विल सी एवरीवेयर दे यूज लॉट ऑफ वर्मिसेली। अब हमने इसको देखो वर्मिसेली ऑलरेडी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, एंड देन जब पानी बॉईल होगा देन इसमें हम राइस डालेंगे। ये पानी डाल चुके हैं, एंड वी विल बी एडिंग अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट। मैं वाटर ये राइस को बना रहा हूँ ओपन में, सो आई यूजिंग डबल क्वांटिटी ऑफ वाटर। बट अगर आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो यू हैव टू यूज इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। Also we have a question by Mr. Sharoj. Oil replace कर सकते हैं घी के साथ? Yes, you can use ghee, and I'm trying to use it olive oil in my entire recipe, so that's why I'm not using ghee. But yes, you can use ghee. We have a question by Miss Arpana. Hi, I'm Miss Arpana from Dubai. How much vermicelli? Vermicelli, I have used almost like 5 to 10 grams. It totally depends on the rice, how much you're taking. If you're taking 1 kg of rice, that's a lot. So you have to use almost 50 to 80 grams of vermicelli. हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें अपने राइस डाल रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी सोक करके रखे हुए थे। आई एम यूजिंग बासमती राइस। Well, actually, we have a lot of viewers from the worldwide. Greetings you at the moment. That's great, guys. Thank you so much for joining my session. Chef, would you just repeat again what are you going to make today? Because Miss Chetna is asking, what are you going to make for today? Today, I'm making vermicelli rice with Imam Bialdi. Imam Bialdi is made up of eggplant, and it is fried or even roasted. I'm frying it. You can even roast it if you want a healthier version. And then we stuff with a very nice recipe, with very nice stuffing. Also, Chef, we have Miss Amina asking, how are you doing? Your job, and greetings from Bangladesh. Thank you so much. Thank you so much. Everything is really well. I'm enjoying and doing live session with you guys, and I hope you guys are enjoying my live session. We have Miss Salina asking you vermicelli rice and water ka ratio. Water ka ratio, I'm using it. I'm making it open, so it has to be less, double quantity of water. But if you're making in a pressure cooker, it has to be the equal quantity of water.
I think we have a viewers going to ask you to repeat the recipe again. I guess we're gonna do in the end of the session. Yes, definitely we're gonna do that. Thanks, Monica. Now you can see हमारा राइस ऑलरेडी पकना शुरू हो गया है और ये धीमी आंच पे पक रहा है. Now you can see the rice is cooking already. That's a vermicelli rice. और इसमें हम थोड़ा सा we can add chopped parsley to give it a nice color. हमारा राइस बन रहा है. तब तक आपको मैं दिखा दूँ कि हम what I'm gonna use for my stuffing. I will be using chopped onion. I'll be using chopped tomato. I'll be using parsley, some bell peppers, and a peeled tomato. Even you can use different kind of spices. But in Turkey, they use more of a coriander, more of a cumin, and nice bell pepper and tomatoes. So you can use that. Do we have any other more questions? Shilpa Khanna, thank you so much for joining. Hi Chetana. Hi, hello everybody. Thank you guys for joining my live session today. Hi Maria. Maria, she's not my wife. She's my friend, my colleague. Who's helping me out for my live sessions. I'm single. B Square Infinity is asking you, are you married? And No, I'm not married. B Square Infinity. You know very well. He's my friend. Just joking around. Okay, so her name is I think Miss Seema, right? From Yeah, Mumbai. Seema Taparia from Mumbai. Seema Taparia, sorry, I don't want to get married right now. Thank you. So you can see the rice is getting ready. We have a question by Miss Rinku. Sir, rice को कितने time soak करना है? Rice को करना है? आपको wash करके, the more you soak it, the more the faster it's gonna cook. So you have to soak it for 1 hour. Wash it nicely and then cook it for 1 hour. We have a question by Miss Nabanita. Is Yeah. it necessary to make rice with vermicelli or can make simple rice? You can make simple rice, you can make cumin rice, you can make plain rice, green pea rice. But vermicelli, as I'm doing Turkish, I'm doing Arabic cuisine, so I'm using vermicelli rice. Vermicelli rice is from Middle East. We have also a question by Miss Pranita. What to use instead of parsley? You can use fresh coriander. If you don't have parsley, you can use fresh coriander. We have Miss Revati. Greetings you. Hello, Hi chef. Revati, thank you so much for joining my live session. Rice अब हमारा almost पक गया है, and you can see उसका almost पानी भी सूख चुका है. We're gonna keep it on the other side at the lower flame till the water get absorbed properly. We have Miss Selena asking a question. पर मेलिसे के जगह कोरिएंडर मिक्स कर सकते हैं? Vermicelli, yes, you can use parsley जगह पे आप coriander use कर सकते हैं. If you don't want to use vermicelli, it's up to you. But I'm making it as a traditional Arabic cuisine, so I'm using vermicelli. Miss Tapas is asking what is vermicelli rice. Can you explain to Vermicelli her? rice, आपके घर में सेवइयाँ होती हैं, that is vermicelli. So I've just used a bit of olive oil, put some vermicelli, make it brown, and then add some butter, or you can add olive oil, a bit of a salt, and a rice. So that is a vermicelli rice from Middle East. If you're gonna come visit Middle East, you will see everywhere people tend to eat vermicelli rice. They add vermicelli in their lot of dishes in with pasta as well. So that is from Middle East. Till then, we have a lot of viewers. Greetings you. Thank you so much. Thank you guys. Rice अब हमारा almost ready हो चुका है. Yeah, rice looks lovely. अब हम राइस को रखेंगे साइड में. Rice is ready. अब हम बनाएंगे हमारी stuffing and then we will fry. Okay, oil is already hot, so let's fry our eggplants first. And I'll keep rice on the behind. Rice is, you can show them rice is ready. How to know rice is cooked? You have to just hold it in your finger and just press it. If it is smooth, it's cooked. So now you can see our oil is already heated up. We have to add eggplants. Let's see if the oil is really hot. We'll just Do we have any questions? We have Miss Jenny saying, hello chef, good Hi, to see you Jenny. for the 7th time in Amul. So she's Thank been you. watching your live repeatedly. Thank you so much, Jenny. Thank you so much for joining my live. Miss Sapna is asking, can you repeat the recipe because she just joined right now. I think I am making vermicelli rice. It's already ready. I'll just cover it with a lid.
and you can. Okay, our rice is already ready. Now we're gonna fry the eggplants. So to fry the eggplant, I think oil is a bit hot. I'll just add in. We are just trying to cool down our oil a bit. Yeah, it's okay now, I guess. So what I'm doing is I'll be adding the eggplants in the oil, and then we're gonna deep fry. Now you can bring the camera closer. अब आप देख सकते हैं हमारा एग प्लांट फ्राई होना शुरू हो गया है एंड Chef, we have. we can answer the question till yet, so you no need to focus there. So, Chef, do you not drain off the scratch from the rice, Miss Sudesha? Sudeshna, sorry. No, yeah. I'm using the equal the amount of water which will be absorbed by the rice, and the rice will be ready. If you have to drain it off, you can use double amount of water, and then you can drain it off. We have also Miss Salini asking rice को कितना कुक करना है? राइस को आपको वेल डन करना है जैसे आप नॉर्मल घर पे राइस बनाते हैं. अगर आपके पास ऐसे राइस नहीं है तो इवन यू कैन डू मेक इट इन अ प्रेशर कुकर. It's not a problem. I have made it open way of method, that is using double quantity of water, olive oil, vermicelli and rice. You can make it in a pressure cooker with equal quantity of water and rice. We have Miss Chetna asking olive oil के बदले घी डाल सकते हैं? Yes, आप घी डाल सकते हैं, olive oil डाल सकते हैं, refined oil डाल सकते हैं, जो आपके पास available है आप डाल सकते हैं. I'm using olive oil as I am trying to make it very traditional. Miss Sahu is asking, is it not necessarily to drain the rice? No, it's not necessary. If you're using extra amount of water, yes, you can drain. But rice का जो असली फ्लेवर है वो उसके अंदर से निकल जाएगा. So that's why I'm using that much of water. In that, I no need to drain the rice. Chef, would you mind if you just repeat the recipe what you're going to cook again, because we have a lot of viewers asking it. Today we are making imam bialdi. Imam bialdi is in a dish with eggplant, and it is stuffed with stuffing made up of tomato, and then we will be frying the eggplants. I will just remove the pulp from inside. I'm going to mix with the stuffing, and then we're going to stuff it back. Put some crumbled cheese. You can bake it, you can fry it, even you can put in the oven, roast it for 20 minutes with tomato sauce. We have Mr. Rupal asking, do we have to cook rice fully or half cooked? Rice has to be well done. It has to be fully cooked. आप देख सकते हैं हमारा जो eggplant है उसका कलर आना शुरू हो गया है. We have Miss Gaur. There are two types of vermicelli. One from which we can make here, which is thin, and the other one thick vermicelli. Which one are we using? Sorry, can you repeat the question? We have Miss Gaur asking you a Okay. question. There are two types of vermicelli. One is which we make here, Okay. which is thin, and the other one is thick vermicelli. Yeah, the thin one, see, it's up to you. If you don't have the thick one available, you can use that one which you use for kheer, जिसको हम बोलते हैं पतली वाली सेवइयाँ, लंबी लंबी जो आती हैं. Or else, even you can, if you don't have the thicker one, you can use the other one. Because the thicker one, it comes with the rice, it gives a very nice flavor, and you have a nice visual look. But the other one is really thin, so it doesn't go much with the rice. We have Miss Selena asking you whole eggplant fry करना है. एगप्लांट को आपको जब फ्राई करना है तो आपको उसको प्रिक करना है, वरना एगप्लांट फट जाएगा. तो आपको क्या करना है, एगप्लांट लेना है, उसका थोड़ा सा एक तरफ से पील मैंने निकाला था, एंड उसके बाद मैंने उसको नाइफ लिया, एंड देन I did, I start pricking it. So once you prick it, it won't blast, and it will be fried properly. और आपको मैं दिखा दूँ, मैंने ये देखिए, मैंने ऑलरेडी एगप्लांट रोस्ट करके भी रखा हुआ है, which I'm going to use today. This is a roasted eggplant. इसको हमने, this is for the healthier version, and the one I'm doing here, it's for a fried version. So there are two kind of egg, the way you can do a stuffing. So आप देख सकते हैं, ये देखिए जो eggplant है, मैंने इसको रोस्ट किया है, and then it's already cooked. So you can see. And now we can remove the pulp from inside and use it for our plating as well. So this is all roasted. So this is for a healthier version. We have Miss Sapna asking you if we are not draining, it won't be sticky, right? No, it won't be sticky. That's the thing. That's the trick, how to cook a rice in a way that the water has to be absorbed properly. I think this is the same explanation that you just explained, that Mr. Pritam is asking you, do we have to make a cut in the eggplant before frying? I think this is the same one. Yes. See, you can have a look at the rice. It's not at all sticky. It's nice, lovely. It's nice texture. There's no water. It's lovely. We have Mr. Hitesh asking related to heart patient can eat this dish.
Yeah, they can. If you are allowed to eat eggplants, there's nothing like that. You don't deep fry. You put in the oven, roast it well, and you can do stuffing. But in heart patients, I don't have any idea that what kind of medicines or what kind of stuff they are eating. They have the proper dietary requirements. So you have to consult your doctor before having any sort of dish or before cooking any sort of dish from the internet or anywhere. We have Mr. Shamil asking you also to make vegetarian dishes. Like you don't. I'm making all vegetarian dishes. This is vegetarian. On the Amul, I have been doing all vegetarian items. We are not using egg, we are not using chicken, we are not using any meat. It's always purely vegetarian dishes on Amul. You can visit my YouTube channel, that is Ministry of Taste by Chef Sarthak Kochhar. Even you can come on Instagram, that is I am Sarthak Kochhar. I share my recipes on my YouTube channel. I have a nice, simple and easy homemade recipes. The link will be is there on the description above. So you can look at my YouTube channel and don't forget to subscribe and hit the bell icon. Chef, we have a lot of viewers asking you which part of the country are you. So can you just repeat clear and loudly so that they can? Yeah. I'm from India. I'm from India and I'm in UAE right now, United Arab Emirates, working with Hilton Garden in Ras Al Khaimah, and I'm a head chef in this property. And yes, हम इंडिया से हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स है कि हिंदी में बात करो। जी, सो बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं हिंदी में बात करने को तैयार हूँ। मिस जयश्री साहब बता रही है कि हमको हिंदी में बात करने के लिए। जी बोलिए, हम हिंदी में बात कर रहे हैं। आप बोलिए आपको क्या पूछना है, मैं आपको हिंदी में समझाने को तैयार हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है। सो आई विल टॉक इन हिंदी नाउ। मिस कल्याणी इज आस्किंग व्हिच राइस हैव यू यूज्ड? मैंने यूज किया है बासमती राइस, और आप के पास अगर बासमती नहीं है तो आप दूसरा राइस यूज कर सकते हैं, बट बासमती इज रियली नाइस एंड रिच इन फ्लेवर। Also we have Mr. Deepak asking question again, can we add some cashew nut in rice and saffron? कैशू नट्स? Yeah. यू कैन ऐड कैशू। आप कैशू डालें, आप बादाम डालें। मैं अपनी स्टफिंग के अंदर डालने वाला हूँ पाइन नट्स। ये देखिए मेरे पास पाइन नट्स हैं। ये अभी हम मिडल ईस्ट की रेसिपी में यूज़ करते हैं। आप डाल सकते हैं काजू, आप बादाम डाल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। देखिए आप हर डिश के अंदर वेरिएशन कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक डिशेस विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेरिएशन। प्रॉपर ट्रेडिशनली बना रहा ताकि हम इंडिया में जो सब लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, दे कैन cook the same way which I am doing. Miss Versa has a question. Is this roasted vermicelli? वर्मिसेली को मैंने खुद रोस्ट किया है। इट्स नॉट रोस्टेड वर्मिसेली। Also Miss Sushma is asking you what vegetable can we use other than eggplant? Eggplant इस डिश का मेन ingredient है, so I don't think so you can replace that. Just have to give me a second. Eggplant is dish का main item है, so I don't think you can replace that. But yes, if you want to stuff it, you can stuff with bell peppers, you can stuff with tomatoes. That is also baby marrow, zucchini. That is a different kind of recipe which you can do. Miss Mita is asking roasted in oven. रोस्टेड इन ओवन, यस, हमने ओवन में भी रोस्ट किया है और हमने फ्राई भी किया है। हमें दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ ताकि वट एवर यू वांट टू चूज इज ऑल अप टू यू। इफ यू डोंट हैव ओवन यू कैन फ्राई इट, इवन यू कैन पैन फ्राई इट। Miss Arpana has a question to roast the eggplant. What do we do? For to roast the eggplant, you just prick the eggplants with a knife I've already shown. Add some salt, just glaze with some olive oil and put it in the oven 180 degree for 10 minutes. Your eggplants are ready. Yeah. Now what we are going to do, we are making the stuffing, which is the very important part. तो जिसके लिए हमने ऑलरेडी गार्लिक रखा हुआ है, गार्लिक क्लोव। इसको मैं क्रश कर रहा हूँ। आप इसको क्रश कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट आई प्रेफर आई एम गोना क्रश इट। गार्लिक को मैंने क्रश कर लिया अपने पाम से, एंड यू कैन शो देम द पैन वेयर आई एम गोना मेक द स्टफिंग। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे। We have a question by Miss Kavita. What masala salt you put in the rice? I didn't put anything. I have just put vermicelli, olive oil and salt. बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा यूज नहीं किया ताकि आप लोग घर पे बना सकते हैं। वर्मिसेली राइस इज अ बिट डिफरेंट। इंडिया में आप लोग देखेंगे पीपल यूजुअली डोंट प्रिपेयर। Chef, I think we have a lot of question in regards to roast. Roasting the eggplant. So Yes. can you just repeat again? Sure, I will. We have Miss Alka asking how to roast in oven, and You can roast in your oven. You have to just prick. आपको नाइफ लेके उसके अंदर छेद करना है। छेद करने के बाद जैसे मैंने किया था, उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सॉल्ट लगाना है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है, एंड देन यू हैव टू पुट इन दी ओवन। 10 से 12 मिनट के बाद आप देखेंगे आपके एगप्लांट रोस्ट हो चुके हैं। ठंडा होने के बाद आप उसे खोल लें। जैसे आप बैंगन के भरता के लिए रोस्ट करते हैं बड़े बैंगन को, वैसे आपको छोटे बैंगन को रोस्ट करना है। we have Miss Mita asking you, can we roast on a gas flame? Yeah, you can do that. Same like बैंगन का भरता, what you do. अब हम स्टफिंग बना रहे हैं जिसके अंदर मैंने पैन में ऑलिव ऑयल डाला है, थोड़ा हमने भुना प्याज डाला, चॉप अनियन डाला है, और अब इसमें हम गार्लिक डाल रहे हैं क्रश किया हुआ।
एग प्लांट को ज़्यादा कलर, अनियंस को ज़्यादा कलर नहीं देना है. एंड देन नाउ वी हैव एडेड अ गार्लिक. हम कुक करेंगे थोड़ा. We have Miss Kuku asking you what else we can use instead of eggplant for this dish. Eggplant is the main ingredient for Imam Bialdi, so I don't recommend कि आप उसमें कुछ changes करें. So it's all up to you. And camera lady is from my country, India only. No, I'm from Nepal. It's the same. We don't distinguish with the countries. At least I can speak Hindi. Yes. तो आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी कलर आना शुरू हो गया है. गार्लिक डाल दिया है. गार्लिक हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है. एंड देन नाउ वी हैव टू ऐड आवर पेपर्स जो मैंने काट के रखे हुए हैं, जैसे है येलो पेपर, रेड पेपर, ग्रीन पेपर. देखिए ये आपके ऊपर है. अगर आपके पास सारे कलर के पेपर नहीं है तो आप खाली ग्रीन पेपर जो इंडिया में इजीली अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं आपको तीनों कलर के पेपर यूज़ करने हैं. We have Miss Sapna asking you, did you add rice and vermicelli together? नो, फर्स्ट हमने ऑयल डाला था जिसमें मैंने वर्मिसेली को रोस्ट किया है. एंड उसके बाद अब मैंने बाद में राइस डाला. We have Jayshree asking you, राइस में नमक डाला राइस है? में थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि राइस बिना नमक के बिल्कुल बाल रहेगा, तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है. बाकी नमक हम एगप्लांट के स्टफ करने में डालेंगे. एंड आई होप आप सब मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे. दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ टेस्ट बाय शेफ सार्थक कोचर. लिंक ऑलरेडी ऊपर डिस्क्रिप्शन में है. गो सब्सक्राइब एंड लुक एट माई वेरी ईजी एंड सिंपल रेसिपीज़. जो रेसिपीज़ मैं घर पे आप लोग सब घर पे बना सकते हैं. अभी सामान अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. और यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम एंड दैट इज़ आई एम सार्थक कोचर, वेयर आई शेयर माई ब्लॉग्स, वेयर आई शेयर माई रेसिपीज़, वेयर एवर आई ट्रैवल. यू विल सी UAE. We have Miss Kavita asking you, roast on the gas also can be like bharta. Yeah, that bharta style. Yes, that's Yeah. what I'm talking about. Yes, definitely. हमारा bell pepper इसमें हमने डाल दिया है. This is almost getting cooked. Now we'll be adding chopped tomatoes. We have Miss Varsha asking you, can you repeat the recipe of rice and vermicelli again? I think we're gonna do in the end of this Yeah, live at the session. end of this session, I will share the recipe for sure. Everybody can have a look at my recipe. We have Miss Kavita asking, what is the name of this dish in Dubai restaurants? It is Imam Bialdi. Imam Bialdi. I'm putting a bit of a salt. इसमें हम डाल रहे हैं cumin powder. मैंने पाइन नट्स रोस्ट करके रखा हुआ है पहले से ही. थोड़ा सा पाइन नट्स, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, और इसमें हम डालेंगे हमारा पिसा हुआ टमाटर. थोड़ा सा पिसा हुआ टमाटर. Chef, we have Miss Suman asking you, vermicelli rice को फ्राई करना है कि बॉईल करना है? वर्मिसेली को आपको पहले फ्राई करके ब्राउन करना है. उसके बाद आपको उसमें राइस डाल के, जैसे आप नॉर्मल राइस बनाते हैं बासमती राइस घर पे, वैसे बनाना. We have Mr. Ratnesh asking, we are missing Revati. Thank you, Ratnesh. She's in India right now. Once she'll be back, she will definitely I'll be doing alternate sessions. One with Monica, one with Revati. Both are as good as me. We have Miss Jane asking, your recipes are awesome. Thank you so much. Thank you so much for all your love and support. What's the traditional name of vermicelli rice in Middle East? It's vermicelli rice. They call it vermicelli rice. It is सेवैयाँ हम इंडिया में बोलते हैं. यहाँ पे they call it vermicelli rice. Now you can, I can have a nice fragrance of cumin, coriander, tomato. Our stuffing is almost ready. Eggplants are ready. It's time to do the plating and finish our lovely session for today. इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, like half of a teaspoon, to give it a nice tangy flavor. Chef, I must say that the smell is really good and Thank you it's so much, mouth-watering. Monica. You will be trying it anyways. We have Miss Kalyani asking, can I add broccoli? Yes, no, broccoli you can add. See, I am telling you, you can do variations. There is no problem to do a variation. That is totally depends upon you. हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है. नाउ आई विल शो देम द एग प्लांट. यू कैन सी द एग प्लांट. इसमें से जो थोड़ा सा मैं अंदर का वो है बैंगन, मैं उसको निकाल रहा हूँ एंड आई एम एडिंग इट इन द स्टफिंग. स्टफिंग में कॉर्न कैरेट भी मिक्स कर सकते हैं हम लोग. आपके ऊपर है, आप कोई भी अगर आपको वेरिएशन करना है यू कैन डू दैट. तो हम इसको एग प्लांट को खाली कर रहे हैं ताकि इसमें हम स्टफिंग डाल सके. इसमें एग प्लांट डाल दिया है मैंने. यू कैन हैव अ लुक. और इसे मिला देंगे.
तो इसमें प्रॉपर एग प्लांट का फ्लेवर आएगा. Miss Jane is giving you a compliment about how beautiful your kitchen looks. Thank you so much. Now it's the time for a plating. I just asked Monica to come on this side so that we can plate. And yeah, my stuffing is ready. My rice are ready. Everything is sorted. Now it's the time to plate. So we'll be doing two sort of plating. The first plating would be with the roasted eggplant. So here it is. I have to take a bowl and हम उसमें डालेंगे हमारा जो राइस बना के रखा हुआ है. आप देख सकते हैं राइस कितना ग्लिटरी, कलरफुल और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. सो आई एम एडिंग अ राइस ऑन द बेस. दैट इज वर्मिसेली राइस ऑन द बेस. एंड देन हमारा जो एग प्लांट है, ये एग प्लांट जो मैंने यूज किया है, दैट इज अ रोस्टेड एग प्लांट. फिर इसमें हम डालने वाले हैं हमारी स्टफिंग. यू नो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर. अगर आपको ऐसे नहीं बनाना, आप इसको इसमें स्टफिंग डालने के बाद आप इसको ओवन में डाल के रोस्ट कर सकते हैं, ऊपर से चीज डाल के. दैट लुक्स ऑल्सो रेडी वेल एंड दैट इज द ट्रेडिशनल वे. आई एम डूइंग अ वेरी इजी मेथड फॉर यू गाइस. यू कैन सी एग प्लांट हमारा चल चुका है. Just remove this extra bell pepper. Miss Gupta has said, Monica, mera comment bhi bol do, handsome chef. Thank you so much, Miss Gupta. Thank you so much for your lovely feedback. You can see, have a look. That's our first plating. That is with the. You can have a look how it looks like. इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा क्रम्बल फेटा एंड पाइन नट्स. तो हमारा फर्स्ट प्लेटिंग तैयार है. We have Miss Neetu asking, awesome, say what dried fruit to be mixed? Sorry? What dry fruit to be mixed? Dry fruit, you can add raisin, you can add pine nuts. It's all up to you. Totally depends upon you. हमारी प्लेटिंग हो चुकी है तैयार. You can just show them our nice, lovely plate. The first plate, that is with roasted eggplant. This is with roasted eggplant, and the one we're gonna do, the second one, is with the fried eggplant. So I'll just remove this one. I get another plate, and I'm gonna bring our nice fried eggplants. Chef, we have Miss Arpan asking you your Insta account. My Insta is I am Sarthak Kochar, और इसका ऑलरेडी जो लिंक है वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने. Now I'm plating our vermicelli rice. आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं आपको ऐसे सर्व करना है. आपको सॉस ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा सॉस डाल सकते हैं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. कोई मैं प्लेटिंग सोच के नहीं बनाता, जो सामने आया है. एंड देन आई एम गोना जस्ट प्लेस इट नाइसली ऑन दी प्लेट. एंड उसके बाद हमारे जो हमने एग प्लांट फ्राई करके रखे हुए हैं, आई एम गोना पुट दोस इन अ प्लेट. यू कैन जस्ट and now you can see the eggplant जो मैंने फ्राई किया था. इसका मैंने ऑलरेडी स्क्रैप करना थोड़ा सा, ऑलरेडी मैंने मिक्सर में डाला हुआ पहले से ही. We have Mr. Priyash asking, is this feta cheese on the top? Yes, it is crumbled feta cheese. It's up to you. You can add if you have a cottage cheese. There's no hard and fast rule that you have to use the same. So you can have a look. This is our eggplant. And now I will be stuffing it with our stuffing. Here we go. Chef, we have a lot of viewers giving you a good compliment. Thank and you so much. They're running here to eat your Thank you so lovely much, guys. dish right now. Thank you. This is a very healthy, very nice Turkish dish. मैं सारी डिशेस ट्राई कर रहा हूँ मिडल ईस्ट से. जो मैं रेसिपी आपको सिखा सकता हूँ मैं सिखाऊं, ताकि आप लोग इंडिया में रह के भी मिडल ईस्ट की रेसिपी ट्राई कर सकें. शेफ रेसिपी का नाम आप फिर से बता सकते रेसिपी का नाम है इमाम बेयाल्दी. एग प्लांट की रेसिपी है, प्योर वेजिटेरियन रेसिपी है. एंड हियर इट इज प्लेटेड ऑलरेडी. आई विल जस्ट गेट माय क्रम्बल चीज. Here we have the crumbled cheese.
You can use any other kind of cheese, not a problem. There is nothing hard and fast rule that you have to use only feta cheese. आपके घर में पनीर है, पनीर क्रश करके डाल सकते हैं. And yeah, you can have a look. We have a bit of crumble feta cheese on the eggplant. Chef, we have a lot of viewers giving a nice feedback and mouth-watering and yummy. Thank you so much. Thank you guys. I'm just so glad and happy that you guys are enjoying my recipe. Miss Mita is saying you to come with some sweet dishes for your next session. Definitely. You can visit my YouTube channel. I have sweet dishes there, healthy sweet dishes on my YouTube. That is Ministry of Taste by Chef Sarthak Kochhar. You can visit there and have a look. And now we'll be just putting a bit of a pine nuts. And our plating is ready. We have Miss Virinda asking you, can we use boiled kidney beans in stuffing? Yes, you can. Kidney beans, or else you can use chickpea. This all goes really well. And we now have Miss Devanshi asking you, can we use cottage cheese? Yes, you can use cottage cheese. I have just drizzled a bit of olive oil, and our recipe is ready for serving. You can make it a bit colorful. It's all up to you. I'm just adding a bit of peppers and everything, and our recipe is ready. You can squeeze off some freshly squeezed lemon juice. I'm gonna place it here, and we're gonna have some of the nice cumin powder on the plate, and then we're gonna place it some feta, which you can enjoy on the side with some coriander. And our plate is ready. You can have a look at Imam Baldi with nice vermicelli rice, a very healthy recipe in two variations. The one is with fried and the one is baked. So आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड यूज करना भी यूज कर सकते हैं. मैंने दोनों मेथड बना के दिखाए हैं आपको. You can have a look at both the recipes, and I hope you guys are enjoying my lovely session today. To make it spicy, you can add chili, you can add, chef, I'll definitely try it. I like the eggplant. Usually I don't like the eggplant. This dish is really amazing. You can have a look. It looks so lovely. We have two different sort of recipes. One is fried and the other one is roasted. So दोनों हेल्दी रेसिपी हैं. आप कोई मर्जी रेसिपी बनाए, ये बनाए या ये बनाए, दोनों का टेस्ट एकदम सेम है. बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है. हम लोग एगप्लांट घर पे नहीं खाते, बट इफ समबडी कम्स एंड यू प्रिपेयर दिस सॉर्ट ऑफ रेसिपी, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगी. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, डोंट फॉरगेट मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करना. दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेस्ट बाय शेफ सार्थक कोचर. और मेरे इंस्टाग्राम पे दैट इज आई एम सार्थक कोचर. इवन ऑन फेसबुक आई एम देयर सार्थक कोचर. और मैं अपने लाइव सेशंस करता रहता हूँ अपने पर्सनल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे. आई कीप ऑन शेयरिंग माई वीडियोज. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, लुक एट माई वीडियोज, कमेंट, डू लीव योर फीडबैक, एंड आई होप to see you again soon with another kind of different recipe. And just let me take the camera, and here we go. Guys, thank you so much for joining my session today. I'm so glad that everybody's liking my sessions. Today was my 7th session with Amul. I'm coming back again on 14th of August at 5 p.m. आना ना भूलें, मेरी वीडियोस चेक करना ना भूलें, यूट्यूब पे जाना ना भूलें, फेसबुक पे जाना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी. आई शेयर माई ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम पे आई शेयर माई ट्रैवल. एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू कुहू, एंड थैंक यू. आई पास योर रिगार्ड्स टू मोनिका. थैंक यू कुहू, थैंक यू गाइज, थैंक यू शालिनी, थैंक यू सरोज, थैंक यू everybody for joining my session. Thank you Amul for giving me an opportunity. And guys who have not joined late can see what I have prepared today. This is Imam Baldi with vermicelli rice. बहुत easy and interesting recipe है. I hope आप सबको पसंद आई होगी. And yes, it is Imam Baldi. You can have a look, and don't forget to visit my YouTube channel. That is Ministry of Taste by Chef Sarthak Kochhar, and Instagram, that is my name. I am Sarthak Kochhar. So guys, I think I should take a leave. And yes, everybody wants to see a view outside, so just let me show you the view, and we will end our session. So here it is. A lovely view from my hotel. This is my hotel where I am right now. You can see and have a look at such a lovely hotel it is. Hilton Garden Inn, Ras Al Khaimah. You can just have a look. It's a beautiful property. You should visit Ras Al Khaimah whenever you are in UAE, whenever you're in Dubai. Visit Ras Al Khaimah and visit my hotel. This is our nice lovely restaurant, and we will be serving you here. It is a view. Instagram details Shraddha. Instagram is I am Sarthak Kochhar. You can visit on Instagram as well as YouTube. Here it is.
So guys, thank you so much. Stay home, stay safe, happy cooking, and don't forget to subscribe my YouTube channel, that is Ministry of Taste by Chef Sarthak Kocha. और घर पे रहें, खाना बनाएं, मेरे साथ बनाते रहें, एंड मुझे भूलें ना। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, अपने प्रोफाइल पे शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेट मोर एंड मोर पीपल एंजॉय माय रेसिपी एंड हैप्पी कुकिंग। बाय बाय, नमस्ते।